Good morning, everyone. Welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we start with the remaining part of bailment and pledge. Bailment and pledge ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲୁ ନା first types of bailment, bailers ର duty and bailment ର meaning ଟା ଦେଖିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିया ନା care to be taken by bailee। जे भी बेली अछि जाहु भी गुड्स ଆମେ ଦଉଛୁ ସେ କଣ କଣ care ନବ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିया। care to be taken by bailee। Section number 151 provides that in all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take his own goods of the same bulk, quality and value of the goods bailed. तो से कौन कहूची बेली जे भी अच्छी से कौन ऑर्डिनरी सिचुएशन रे ऑर्डिनरी केस किंबा सिचुएशन रे ता पाखरे जदी सेम टाइप गुड्स देखो तो से केमिति केयर नहीं थांदा है ना ordinary case of situation रे if goods would have existed with him would have existed with him माने तार own goods हेले से केमिति केयर नहीं थांदा according to the bulk quality and value जदि बेसी वैल्यूएबल गुड्स से को प्रकार केयर नहीं थांदा सिक्योरिटी गार्ड रखि थांदा कि कोन कर थांदा जदि बल्क गुड्स होची तो वेयर हाउस रे जदि मनरा रखि थांदा तापर कोन क्वालिटी जदि तार डेट रेट न हेगिरी कोन कर पर थांदा ताको कोन फ्रिज रे रखि थांदा कि कोन ले भी कर थांदा तो तार निजर गुड्स हेले से केमिति केयर नहीं थांदा सेमिति केयर नबार अछि के बेली जे कि रिसीवर ऑफ गुड्स अछि बेली माने मन अछि तो रिसीवर ऑफ गुड्स क्लियर तापर देखो in Naglinga Chetiyar versus Kayarbi and Chetiyar AR 1915 it was held that where the standard of case care prescribed by section 151 is not observed the bailee cannot be exonerated from his liability simply because the bailie's goods were also lost along with the goods paid बुझि पाला जिनसे कौन हो चली कहले it was held that the standard of care prescribed section number 151 जदि किछि केयर प्रेस्क्राइब करूची हैला टाइप ऑफ केयर से प्रेस्क्राइब करूची से केयर जदि मनर बेली एक्सरसाइज करूनी हैला एक्सरसाइज करनी तो he cannot be exonerated from his liability simply because the bailie's goods were lost along with the goods paid हैला ताको कोन हमें फोर्स करि परियानी किबा आउ किछि सेक्शन एक्सरसाइज करि परियानी जस्ट बिकॉज़ से केयरलेस हेगिरी अछि ता गुड्स प्रति एंड हमर बेलर्स रो गुड्स प्रति दिजन जार गुड्स प्रति जदि से ये हेगिरी अछि देन ओनली कोन हमें एत्ते की माने तार लायबिलिटी टा पूरा पूरी डिस्चार्ज करि परिबानी किछि एक्शन हमें नै परिबा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 151 तापर देखो एडा होछि केस लॉ 1 केस लॉ 2 कोन ना in Simon Truck Operator Union versus National Insurance Company Limited it was held that the carrier cannot be exempted from its own negligence or negligence by his agent where goods carried at owner's risk and cannot escape liability to make good loss बुझला से कौन कहै देखो it was held that the carrier cannot be exempted from its own negligence or negligence by his agent where goods carried at owner's risk and cannot escape from the liability to make good loss माने जदि मनर जे भी एजेंट को हमें देछ माने बेली रो एजेंट को जदि मनर हम किछि देछु किबा बेली रो एजेंट रो जा भी कैरियर अछि माने जे कि ड्राइवर अछि ताकू जदि किछि देछु ता केयरलेसनेस लागि जदि किछि लॉस होला तो ही विल बी रिस्पांसिबल ताकू हम एमति छाड़ दे पारियानी खाली बेली को क्वेश्चन करले हबनी बेली रो एजेंट भी रिस्पांसिबल रहबो काहेकि एट ओनर्स रिस्क खाली लेखा आइछि से सिग्नेचर करछि सेति के एग्रीमेंट ताको भितर हेछि जेतु ताके कोन करिवे से जिंसडा को ताको हले जोर से पचरी पारे क्लियर दिस इज केस लॉ नंबर 2 लेखा एडी care to be taken by bailey care to be taken by bailey हला फर्स्ट सेकंड केयर नबो रीजनेबल केयर
जनरली जति के केयर नहीं था तो किमिति नबो रीजनेबल केयर इन सेंस that the goods billed are his or her own goods जहाँ किसी भी गुड्स बेल हेची सेउडा कोन तार निजर गुड्स एली कहिकी मन रखी की से कोन करबा माने तार निजर गुड्स हेथिले से केमती केयर नै थाना सेमती आगा केयर नबो एडा होची फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रे से कोन कहूची देखो केस लो पॉइंट कोन थिला हमर से कहूची की where the standard are prescribed by section 151 is not observed the bailey cannot be exonerated माने कोन relieved or blamed from his liability simply because the bailey's goods were also lost along with the goods paid हैला in case the bailey due to his keen negligence loses his goods as well as bailor's goods then he may not be relieved from his liability बेले से सिंपैथी देखि पागे कि मोर एले हजि जेछि देखो मो एले कोन कर पर थांदी इन दी कथा जा कहियन हैला से कोन तार लायबिलिटी रा जिंती अछि सिमती आगा थिबो एंड ही इज लायबल फॉर द एक्सटर्नल थिंग्स माने ता परे जहा भी अछि से सब कॉन्सिक्वेंसेस को ही इज सोली लायबल क्लियर देन द थर्ड थिंग हियर इज से कोछि की जितोलक भी होछि इट हैज हेल्ड दैट द कैरियर कैन नॉट बी exempted from his own negligence or negligence by his agent where goods carried at owner's risk and cannot escape from the liability to make good the loss हैला एडी लेखो bailey or bailey's agent किंबा कोन bailey's carrier माने के ट्रांसपोर्टर can also be held liable for the loss cost due to their negligence and shall be responsible for making good the loss माने कोन तारा लॉस रिकवर करिया पे हेल्प कर परियो making good the loss क्या making good the loss ए तीनटा पॉइंट से कहिछ हैला केस लो पॉइंट भी सेथरे इंक्लूड कर देली माने ऑन द होल से जदी कहया चाहछ कोन बेलर जेतरो बेली को गुड्स देला तो बेली पूरा पूरी रेस्पोंसिबिलिटी अछि ता प्रति तो पूरा पूरी रेस्पोंसिबिलिटी माने से तार गुड्स सिंधी हैंडल करथन ना हम गुड्स भी सिंधी हैंडल करबो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इज से जदी काको दोछि हैंडल करिया पे तो ताको भी सेती अगर रेस्पोंसिबिलिटी थिबो ना नै ऑब्वियसली थिबो थर्ड पॉइंट कोन जे भी से भूल भाल करछि जे भी कोन मिस हैंडल करछि तो सी आगे रिस्पांसिबल सी आगे माने ताको आगे हम पचारि परिबा आ तार लायबिलिटी केते जाय रहबो ना जेते जाय से हम लॉस ता फुलफिल करनी माने हम लॉस ता रिकवर करिया हम जेते जाय हेल्प करनी तार लायबिलिटी ता कंप्लीट हे क्लियर हैला तापर देखो बेली व्हेन नॉट लायबल बेली को केबे हमें लायबल कहि परियान
Section number 152 provides that the bailee, in the absence of any special contract, is not responsible for the loss, destruction, or deterioration of the things bailed if he has taken the amount of care described in the section number 151. जदि से कहूची कि देख बेली केबे लायबल रहयन बेली रो भूल है कहि हम केबे कहि परियनी एटा टिक इंपोर्टेंट ता हला काहेकि सब बेली रो बेसी रिस्पांसिबिलिटी हम देखुछु खाली एक्सेप्शनल केस गुटे दीडा अछि तो एक्सेप्शनल केस कोन इन भल से सुनो इन द absence of माने किछ स्पेशल अटेंशन नहीं in the absence of any special terms and conditions हैला ताकू किछि कोन terms and conditions हमें स्पेसिफाई करूनु due to which कोन हैला जान ना गुड्स जहां भी दिया है गुड्स लॉस हैला हैला कोन डिस्ट्रक्शन हैला किंबा कोन हैला डेटेरियोरेट हैला बुझो देखो जदि किछि गुड्स दिया हेछ हैला पेट्रोल दिया हेछ पेट्रोल दिया हले इम्प्लाइड कंडीशन कोन तू सेमति ताको रखिबो आ जदि हाई क्वालिटी पेट्रोल अछि हाई क्वालिटी पेट्रोल सेडा हेछि तो तमे कोन न जानि कि भी सेडा इवापोरेट हेबार वेपराइज हेबार स्टार्ट हे जिवो जेतु वेपराइज हेबार स्टार्ट हे जिवो ताको देखि स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन से कहि थांदा किंबा कोन गुटे डब्बा रे जेतोल से पेट्रोल डी दोछ डब्बा रे पेट्रोल डी दोछ ताको कहया कथा ना कि ए डब्बा रे पेट्रोल अछि इमिति अछि एमति क्वालिटी रो गुटे पेट्रोलियम प्रोडक्ट टी अछि जोडा कि तू माने नॉर्मली इन छाडू तो लॉस हे जिवो तो जदि से किछि मेंशन करनी आ लॉस हेले तो बेली को हम किछि कहि पारे सेकंड पॉइंट सुनो डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन माने कोन से बाहर किछि जिंस छाड़ देछ हैला माने कोन गुटे एमिति गुटे कार्पेंट वर्क करी कि से रखी छि गुटे वुड फर्नीचर टी देछ से वुड फर्नीचर कोन हैला ना देखिबा पे सेना बहुत स्ट्रांग लागु छि तो बेली कोन करला घर बाहर आराम से रखी देला तो एमिति नॉर्मली पिला ने खेलला आलो कोन हैला सेडा जेतु फ्रेगेल हे छि माने मटेरियल दा फ्रेगेल से किछि कहनी कि बाहर को हम इंदी ताको प्लास्टिक रे इंदी करछु बट सेडा मटेरियल दा बहुत माने बहुत वीक मटेरियल दा से कहनी पिला ने खेलले आसी ता ऊपर पड़ले सेडा भांगेला तो कार भूल कहि परिया कि से कहि थांदा ना कि एडा रे बसिले ले बहुत डेंजर हैला गुटे वुड फर्नीचर एमटीआर अछि तो पिला ने सेतरे बसले किछि हबनी जनरल सेंस रे बट जेतु एडा खाली वुड रो पेंटिंग दिया है बट भीतर बहुत फ्रेगेल मटेरियल बहुत वीक मटेरियल से न कहि थांदा ले कहले से टिके केयर नहीं पर थांदा ना बुझि पालो तो से कहिनी डिस्ट्रक्शन हिला तो बेली को हम किछि कहि परियानी थर्ड इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट डेटेरियोरेट माने कोन ना जदी किछि प्रोडक्ट अछि पिकल मनर से देला पिकल एते जल्दी खराब हबनी बट केतरे पिकल थाउ जोडा कि 3 डेज की 4 डेज माने भितरे कोन हबो सेटा खराब हे जिवो तो ताको स्पेसिफिकेशंस मेंशन करियो पडियो कि ए डेज भितरे ए टेंपरेचर भितरे से जिंसटा खराब हबो अली कहि से कहि थांदा ले कहले बेली कोन ताको केयर नै थांदा जसे जदी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किछि मेंशन करनी आ से जिंस खराब हला तो बेली को हम किछि कहि परिया कि नै तो तीनटा भाई तीनटा एग्जांपल देली बहुत भल से मन लॉस destruction and deterioration of the goods तापर से कुछ देखो he has taken the amount of care described हला एतिकी कंडीशन केबे हबो ना goods loss जहा भी goods दिया आइছে सबुजा जिंस रो एतिकी जिंस हेले when the goods when the bailee has taken reasonable care as prescribed under section number 151 clear section number 151 एतिकी जिंसो कोच एटा बहुत इंपोर्टेंट काहे गेले कहले को केस रे बेली को हम रेस्पोंसिबल कहि परियानी बेली रो लाइबिलिटी दा कोन एक्टिवेट हेई पारिबनी सेटा हम जाननु goods loss destruction deterioration when the bailey has taken reasonable care as prescribed as under माने दीडा कंडीशन से कहिछ हला एडा होचे प्राइमरी जिंसो बट कंडीशन नंबर 1 होचे एडा कंडीशन नंबर 2 होचे माने मिस कर देथियो कॉन्ट्रैक्ट भितरे कहया पे एंड सेकंड थिंग इज ए पर्सन दा सेति आगे केयर नै थिबो क्लियर आई होप इट्स क्लियर माने गुटे लाइन से देछि बट सेति रे एतिके एक्सप्लेनेशन दा अछि हला clear termination of bailment देखो termination of bailment माने cancellation of bailment obviously के कर परियो बेलर कर परियो तमे जान गुड्स जदी से देछि से आगा से जिंसडा कैंसिल कर परियो आ गुड्स रिसीव कर देला पर बेली केबे एले से कोन कैंसिल कर परियोनी अच्छा बेलर के गुड्स देबा लोक बेली होछि गुड्स रिसीव करिया लोक आ बेलर रो कांसेप्ट केबे आसे गुड्स देले से नेले आगा आसियो ना
हैला सेते जे तो सेटा हेई पारियोनी आ वंस जेतल से गुड्स दे देला ये बेली हेई जेची तो बेलर अगर से जिनसटा कैंसिल करि पारियो ना नहीं क्लियर तो सेक्शन नंबर 153 provides that a contract of bailment is please underline voidable voidable माने कोन voidable at the option of one party voidable at the option of के कर पारियो बेलर कर पारियो माने से कहूची कोन voidable by bailor voidable by bailor if कौन है बेली does anything contradictory to their previous agreement contradictory to their previous agreement जदि से किछि कथार्थ सुनलानी से contradictory manner रे act करछि माने कोन से रिएक्शन दोनी से कोन कहले कथा सुननी ताको पहुंचेर अछि से पहुंचोनी लेटर टी दोनी जहां भी हो से कोन ता कथा जदि सुननी आले आको फील हैला ले कहले कोन बेलर जे भी अछि से कैंसिल कर दो क्लियर he will no longer be giving the responsibility of his goods to the bailey clear से कुछ देखो inconsistent with the conditions of the bailment क्या this is termination of bailment एग्जांपल जगह देखिबो देखो एडी केस ला पॉइंट गुड दिया अछि A lets to B for hire a horse for his own riding B drives the horse in his carriage this is at the option of A termination of the bailment माने कोन A lets to B हला hire a horse for his own riding के माने गुटे पर्सन कोन ता निज पई गुटे हॉर्स ता हायर करछि राइड करिया पई B drives the horse in his carriage मझिरे से आसीबा रास्ता रे से बी माने ये कर देला कोन पई तार इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट रे एक्ट करला ना नहीं ए ता निज पई कहिथिला ए ता निज पई हायर करछि माने निजे राइड करियली कोई हॉर्स ता हायर करछि ना नहीं हला बट एडी कोन हला बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज बी जे भी अछि से कैरेज मझिरे ड्राइव कर देला तो से कोन ऑपोजिट मैनर रे जे तो एक्ट करला कोन हबो सेटा कॉन्ट्राडिक्टरी हे जबे क्लियर तापर से कहछि इट वाज हेल्ड दैट दिस सेक्शन इज इंटेंडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बेलर whose goods are being used by the bailee in a manner inconsistent with the conditions of the bailment. The bailor may put an end to the bailment although it was created for specified purpose which has not been accomplished or for a prescribed which has not expired, but merely exercising his rights irregularly by the bailee. Example, a subpledge or a premature sale by a pledge will not attract the application of the section. माने से कोन से देखो उते जिंसला पूरा पूरी कॉन्ट्राडिक्ट करले आगा ए सेक्शन अट्रैक्ट हबो अधा जिंस सुनछि अधा जिंस सुननी आले कहले अधा जिंस सुनछि अधा जिंस न सुनले कोन ए जिंसडा अट्रैक्ट हबोनी माने ए सेक्शन जहां भी अछि से सेक्शन नंबर ता एडा पे अप्लाई करबे माने टोटली कॉन्ट्राडिक्ट करियार अछि बट कोन अधा जिंस करछि अधा जिंस करनी आले कहले हम ए सेक्शन ता हेल्ड लायबल करि पारे क्लियर liability for unauthorized use of bailed goods देखो section number 154 provides that bailee makes any use of goods bailed which is not according to the conditions of the bailment he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during use of such them माने unauthorized use of bailed goods unauthorized use माने कौन use without any proper guidance or permission तर permission non agree guidance non agree से कौन करला unauthorized use करला goods रो तो section number 154 provides that if the bailee makes any use of goods bailed which is not according to please underline not according to the conditions of the bailment he is able to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during the use of such time तो कौन करियो जदि तारो परमिशन न थे ये किछि गुड्स यूज करछि तो से कोन कंपनसेशन पई लायबल अछि then bailee is liable to pay compensation bailee is liable to pay compensation for unauthorized use
हैला माने जदी त परमिशन न थे ये जदी यूज करला ली कहले से कोन पेनल्टी लग गया ऑब्वियसली सो लायबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बेलमेंट ऑफ गुड्स तो अल्टीमेटली कंपनसेशन जब देबो फॉर एनी डैमेज for any damage for any damage arising from or use of such goods है ना एग्जांपल जे देखिबो पारे एडी देखो it was held that where a car was entrusted to the defendant as a bailee and as the evidence establishes that he was using the car for his private purpose in contravention of his agreement with the plaintiff the bailier it was held that the defendant was liable for the damages arising from such use गोटे लोक कार देछि रखिया पई हैला से कहिछि मते सितलो दरकार पड़िबो पछरी हैला आर अनऑथराइज्ड यूज माने जदी से कहि दे थांदा कि तो कार यूज करि परिबो देन जदी से यूज करथन तो किछि टेंशन नै बट जेतु कोन से कार ताको न पछरी की यूज करूछि हैला से जानला कोन अनऑथराइज्ड यूज करछि देन कोन ए पर्सन ना पेनल्टी पे लायबल के ना अनऑथराइज्ड मैनर रे जे भी कार यूज करछि क्लियर तापर देखो मिक्सिंग ऑफ गुड्स The goods of the bailier may be mixed with that of the bailee. The mixing may be done with or without the consent of the bailier. What would be the effect in such case? Section number 155 provides the solution of the same. This section provides that if the bailee, with the consent of the bailier, mixes the goods of the bailier with his own goods, the bailier and bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. Hala, jodi permission re mixes with permission तो कौन हम proportionately share he what would be the effect if the goods of the bailier are mixed with the goods of the bailee without the consent मोटा चार्ट बनेबी बट फर्स्ट सुनो भल से जदी consent without consent होची तो सेक्शन नंबर 156 and 157 provide a solution for the same 156 provides effect of mixture without bailier's consent the goods can separated separate ही पारछ देन कोन हबो सेपरेट ही पारनी कोन हबो सेटा हमें देखि तो सेक्शन नंबर 156 रे कोन कोची provides that if the bailee without the consent of the bailier mixes the goods of the bailier with his own goods and the goods can be separated or divided the property of the goods remains in the parties respectively but the bailee is bound to bear the expenses माने जे तो मिक्स कर देछि से कोन सेपरेट ही पारछि जदि से सेपरेशन पे किछि एक्सपेंसेस इनकर करबा पे पडुछि देन कोन हबो एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर एंड एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड के बियर करियो बेली बियर करियो सेक्शन नंबर 157 कोन करछि विदाउट द कंसेंट जदि मिक्स ही होछि और से जिंसडा कोन सेपरेट ही पार इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स बेल the bailier is entitled to be compensated by the सेपरेट हे पानी इंपोर्टेंट हे अछि तार चावल थिला मिक्स कर देला एबे से कोन कहछ मु सेपरेट करी देई दी कहले हबो कि नाही ता बदल रे कोन करियो कंपनसेशन पेमेंट करियो पड़ो एडार चार्ट बनेडा निहाती दरकार लेखो सेक्शन नंबर 4 एडा 156 and 155 to 157 अछि तो फर्स्ट हेडिंग दियो मिक्सिंग ऑफ गुड्स first लिखो with the consent of bailier with the consent or permission of bailier को पछारे कि जदी से करछ गुड्स गुडा को मिक्स हेली तो कोन हबो proportionately shared later on proportionately share later on बुझी पालो सेकंड केस टा कोन हमरो without the
consent of bailor. एडा जो हेची एडार टू पार्ट्स कौन possible to separate or impossible to separate. The bailey is responsible for bearing the expenses incurred for separation of goods. Bailey is responsible to pay compensation for the subsequent loss. Clear? Bailey is responsible to pay the compensation for the subsequent loss. जहाँ किसी भी loss हेची का लगी जहाँ किसी भी loss हेची आमरो माने mix ही जेची in separation लगी ता पे कौन के compensation pay करियो Bailey pay करियो but जदि separable ही पार्च separation is possible and separation पे किसी expenses incur करियो पड़छ मनोर ता पाखरे कौन थिला ना toys थिला से toys Bailor भी देची आ पाखरे भी toys अछि तो से कोन से एते हंड्रेड्स ऑफ टॉयज अछि सब जा मिक्स हे जेछि तो कोन से गोटे लेबरर को एम्प्लॉय करबो अलगा करिया पे सेपरेट करिया पे जे तो अलगा करिया पे लेबरर को एम्प्लॉय करछि से लेबरर को किछि पैसा देबड़ा निहाती दरकार पैसा देई कोन करियो तो सेपरेट करैली कहबो तो से सेपरेशन पे किछि पैसा मानर 500 रुपीस इनकर हला तो से 500 रुपीस बेली दब क्लियर भल से सुनिबो ध्यान दे सुनिबो सब एडिया मन रहि जे विथ एग्जांपल it lekho section 155 section 156 and section number 157 bailor's obligation lekho section number 158 and 164 impose obligation on the bailor hela se kon kochi ta pare kichi obligation dochi mane se kichi jinsa pe liable achi section 158 provides that where by the conditions of the bailment the goods are kept or to be carried or to have work done upon them se kon kochi dekho bhal se suno kept rakhibaro carry karibaro have to work done upon mane kichi kaam baki achi se jinsa kariya pai by the bailey for the bailor and the bailey is to receive no remuneration bailey ko kichi remuneration nai the bailor shall repay to the bailey necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment se kochi kon section number 158 kon kochi jancho na dekho easy jinso da से कहूची आमे गोटे जिंस करछु कॉन्ट्रैक्ट करछु बेलर और बेली अछंदी सेठी कंपनसेशन किबा कंसीडरेशन रो एलिमेंट विषय आमे आज जे माने कथा हेनु तो से कोन कहूची जदी बेलर पाखरे किछि गुड्स अछि मनरा फर्नीचर अछि भल से सुनो फर्नीचर अछि से फर्नीचर पे किछि काम करियार अछि हला फर्नीचर पे किछि काम करियार अछि तो बेली जे भी अछि से बहुत लोक चिन्छि जे कि फर्नीचर ता भल से ये करि पारे माने कार्पेंटिंग वर्क ता भलो फिनिशिंग दे पारे तो जे तो बेली भलो लोक घर चिन्हिछि कम रे हेई पारिबो बेलर कोन करला ताकू किछि गुड्स देला गुड्स देकी कोन कला माने फर्नीचर रो माने फिनिशिंग न करिकि देछि से कहछि किछि काम तो करेगी मते रिटर्न दबो तो से जिंस पे किछि पैसा तांको भीतर नै कंपनसेशन दि जण भीतर किछि नै बेली किछि रिसीव करनी जे तो बेली को किछि बेनिफिट नै तो बेली को जिंस पे लाइक माने बेलर कोन दबो ना एटलीस्ट एक्सपेंसेस दबो माने ताको किछि खर्च हेतिबो से जिंस ठीक करया पे तो से जिंस तो एटलीस्ट से दबो क्लियर तो लेखा सेक्शन नंबर 158 रे से कोन कहछि where in bailment the goods are to be
the goods are to be kept, carried or have to be worked upon by Bailey काम ना for bailor Bailey काम करिबो किंबा करेबो काम for bailor and Bailey not entitled to any remuneration, bailor is liable to pay. Bailor जे अछि liable to pay कौन ना necessary expenses incurred by be liable to pay necessary expenses incurred जहाँ किसी भी expenses incur करछि के बेली ताको पेमेंट करबा पई से बाध्य जदी किछि रेम्यूनरेशन नाही तो रेम्यूनरेशन ताको दोउची तो से एक्सपेंसेस पे मिसई के आगे दमो ना तो से केस आसुनी जदी रेम्यूनरेशन ता दोउनी देन कोन हबो से कहउची एटलीस्ट नेसेसरी एक्सपेंसेस गुडा को पेमेंट करबो केतळ को केप्ट रखिला को कैरीड कैरी करला थर्ड व्हेन वर्कड अपॉन केप्ट माने कोन जदी से रखुची वेयर हाउस रे रखुची वेयर हाउस पे पैसा से दबो कैरी करछ कैरी माने कोन गुटे जगह रा आउडी जगह ट्रांसपोर्ट करछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे पैसा दबो थर्ड थिंग इज have to be worked upon माने जदी ता ऊपर किछि काम करयार अछि कार्पेंटिंग वर्क करयार अछि फिनिशिंग करयार अछि से एक्सपेंडिचर से दबो ना नहीं तो kept carried have to be worked upon three things होछि कीवर्ड्स हियर गुटे गुटे जिंस रो गुटे गुटे केस ला भी डिराइव हे पारिबो दैट्स व्हाई कीवर्ड्स को मैं इनते हाईलाइट करके लिखिछि क्लियर देन देखो 164 provides that the bailiff is responsible to the bailiff for any loss which the bailiff may sustain by reason that the bailiff was not entitled to make the payment or section 164 कौन कहउची bailiff is responsible to the bailiff and bailiff responsible होची bailiff को का पई for any loss which the bailiff may sustain which the bailiff may sustain माने bailiff किछि loss incur करची का लागि by reason that the bailiff was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions respecting them माने से किछि important जिंस मिस करची किछि important direction से देनी हला जा लगी कि से bailment procedure ता गुटे failure हेला कोन हला bailment procedure ता गुटे failure हेला and जो भी reason लागि जदि bailey को किछि loss incur करची तो bailor shall be held responsible हला जिमिति कि bailor रो goods को किछि हेले bailey responsible तो bailment procedure को किछि हेले bailor ता bailey को responsible clear सिंपल जिंस मु कहउछि बेलर ताको गुड्स देला जदी गुड्स कोन हेले से ताको क्वेश्चन करबो हैला जदी गुड्स जहां भी से देछि गुड्स लागि जदी ताको किछि लॉस हैला से ताको क्वेश्चन करिया राइट अछि ना नहीं सेडा का से कहउछि डिफरेंट सेक्शन नंबर रे डिफरेंट ना रे से कहउछि बट अल्टीमेट जिस्ट होछि एडा कांसेप्ट होछि हैला सेक्शन नंबर 164 से कोन कहउछि देखो बेलर सिंपली लिखि दियो बेलर liable to pay for loss ना bailey काले के देखो जैसे कितनी जिंस को देखो not entitled to make payment or to receive back the goods or to give directions respecting them reason first thing होची not entitled to make payment not entitled to make payment then receive back goods or give directions respecting them clear तीनटा जिंस से करि परिबे सेक्शन नंबर 164 तो जहां कुछ भी लॉस थे लॉस टर्म पे हाईलाइट करके लिख दियो जहां कुछ भी
लॉस हेची बेली का पचारि परियो कैन डिमांड मोर लिखि दोछि तमे लिखि पार नॉन कैन डिमांड फॉर कंपनसेशन किछि भी कंपनसेशन जदि ताको दरकार पड़छि ही कैन इजीली आस्क बुझिला दे देखो रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स माने एतिकी जिंस रो तम खाली एतिया जिंस पढिबार अछि यू आर रीडिंग द पैराग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम से भितर जहां किछि भी जिस्ट पॉइंट्स अछि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स अछि वी आर हाइलाइटिंग सेपरेटली तो जेतलो फर्स्ट टाइम रीडिंग करछ त तुम इन डिटेल रीडिंग करिया पे बाध्य एंड योर होमवर्क हैज टू बी डन प्रॉपर्ली काहेकि होमवर्क कोन होछि ना एग्जांपल अछि आमे कांसेप्ट पढि सारनु तो एग्जांपल पढला कांसेप्ट मन रहि जिवो मन पड़ जिवो तो से कांसेप्ट तळे तळे कोन तम निज वर्ड्स रे एग्जांपल टा लिखिबार अछि निज वर्ड्स से एग्जांपल लिखिले कोन हबो ना केस लडा तुम आंसर करला ले हे जिवो माने गोटे प्रोविजन को या प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 2 to 3 केस लॉस वाली कहि पारे क्लियर restoration of goods देखो the goods should be returned after the bailment is over केबे रिटर्न करबो after the bailment is over bailment जेतलो सॉरी जिवो सेतलो goods रिटर्न हे जिवो section 159 provides for the restoration of goods lent graciously graciously माने कोन with gratitude जदी से किछि रिसीव करूची with gratitude जदी किछि दउचंदी किछि रिसीव करचंदी then कोन हबो goods गुडा को restoration हे पारे and section 160 provides for the return of goods on expiration of the time or accomplishment of the purpose. Section 161 provides for the responsibility of the bailey when goods are not returned. हमें three circumstances पढ़िबा जेतडको goods restoration हे जोछ. Restoration माने giving it back. हैला first देखो Section number 159 provides that the lender of a thing you for use made any time require its return. If the loan was gracious even though he lent for a specified time or purpose, but if on failure of the loan made for a specified time or purpose, the borrower has acted in such manner that the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him loss exceeding the benefit actually derived by him from the loan, the lender must, if compels the return, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occasioned exceeds the benefit so derived. Underline karo, indemnify the borrower for the amount in which loss so occasioned exceeds so derived. Section number 159 कौन होची जल्दी जल्दी लिखो सेक्शन नंबर 159 को जी when goods or amount is lent out of gratitude जदि gratitude रे किछि lent होची का गोटे पर्सन को बेली परिया बेली हैला तो ये ताको केबे भी पचारि परिबो केबे can ask for restoration when required किंबा when needed गोटे point when needed our second point होची and when benefit exceeds expenses हैला तर बेनिफिट जहां भी होची सेटा लिखी आ तू बेसी ताको इनकर करिया पे पड़छ हैला दीडा जे जिंसो हबो when needed and when benefit exceeds expenses तापर देखो सेक्शन नंबर 160 Section number 160 provides that it is the duty of the bailey to return, deliver according to the bailey's directions the goods paid without demand as soon as the time for which they were bailed has expired or for the purpose for which they are bailed has been accomplished. तो कौन हबो सेक्शन नंबर 160 को होची जेतळगो हमको दीडा जिंस कोइथिला गुड्स जेबे भी दिया होची दीडा जिंस कोआ होची फर्स्ट थिंग होची कोन हमर जहां भी गुड्स अछि किछि टाइम पर्यंत तमे रखियो सेकंड थिंग होची किछि पर्पस एकम्प्लिश हैला जे तमे रखिबो तो से कहूची किछि पर्पस एकम्प्लिश हैला जे जदी से कहूची तो से पर्पस ता एकम्प्लिश हो तमे से गुड्स रिटर्न कर देबो आ जदी से कहूची टाइम पीरियड पे रखुच माने 2 इयर्स की 3 इयर्स में जदी से रखियो कहछ कि 2 मंथ्स कहछ तो 2 मंथ्स सरला परे तमे से गुड्स कोन करे रिटर्न कर तो सेक्शन 160 सेटा कहछ तो एटा का ड्यूटी ना बेलर goods given on specific purpose or second thing होची for a specified time
जदि स्पेसिफाइड टाइम पे दोची किंबा स्पेसिफिक पर्पस पे दोची then Bailey must return back the goods when purpose fulfilled or time expired. Purpose fulfilled or time expired. Clear? जदि स्पेसिफिक पर्पस पे देची तो पर्पस एकम्प्लिश हेले रिटर्न करियो, जदि स्पेसिफाइड टाइम पे देची तो टाइम सॉरी हेले दे दो. क्लियर? कार रिस्पांसिबिलिटी एडा बेली. बेली जदि किछि डायरेक्शंस दोच कि आपको दे तो ताकू दे पारियो, बट जदि से किछि डायरेक्शंस दोनी तो बेली डायरेक्टली जाई काउ दे देबो, बेलर को दे देबो. क्लियर? Section 161 provides that if the default of the Bailey, अच्छा ए तोड़े आउटे point अच्छी, non-delivery of the goods would amount to breach of contract. जल्दी से सिद्धि करो नहीं, तो कौन ना breach of contract. जल्दी non-delivery कर, मैंने किसी delivery से करो नहीं, non-delivery would result in breach of contract. Please write down breach of contract माने कौन? Failure to exercise. Breach माने कौन? Failure to exercise. Breach of contract. जदि से किसी goods deliver करूनी, goods किसी से return दोनी, से purpose accomplish हैला परे किमा time period expire करला परे ले से जदि रखी दोची, तो एटा कौन हबा हमर non delivery amounting to breach of contract. तापर देखो section 161 provides that if by default of the Bailey, जदि Bailey रो किसी default हैला, the goods are not returned, delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailiff for any loss, destruction, deterioration. Section number 161 कौन कोची? सबो सिमिलर सेक्शन जाबो, खाली की पॉइंट डिफरेंस टिके अछि. तो तमे पेशेंटली सब जिंस लिखि दबो सेतळ आराम से बुझि जिवो. माने तमे ए डायग्राम टा करलो, मु कहूची देखो भल से सुनो. डायग्राम में जेतळ करलो तमरे एथे दीटा पॉइंट अछि, स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफाइड टाइम. दीटा जिंस अछि, ए दीटा जिंस हला पर से रिटर्न करदार अछि आ सेडा होस्तार कोन रेस्पोंसिबल, माने बेली इज रेस्पोंसिबल आमे लिखि दा कथा एडी. आ एडी कोन अछि सेक्शन 161 रे से टाइम पीरियड भितरे किबा से गुड्स हैंडल करला आलु किछि भी लॉस होउची तो के रेस्पोंसिबल? बेली आगे रेस्पोंसिबल. बट से अलगा पॉइंट कोन कहै छै एथरे देखो ना, इफ डिफॉल्ट ऑफ द बेली कार भूल हैता, बेली डिफॉल्टेड माने कोन? fail to perform his duty. Bailey defaulted in doing what? The goods returned, delivered or tendered at the proper time. से कौन करला? नेग्लिजेंट हैला, माने कहला जदी आजि टाइम पीरियड ता सरियाला से कहला कोन स्टडी परे मु देबे. Bailey defaulted due to which default करला ता लकी बनिची due to which the goods lost, destroyed. तीनटा कीवर्ड्स में बार-बार कोच देखो, lost, destroyed और deteriorated. जदि ए तीनटा जिंस हैला तो then Bailey is responsible for compensating the loss. एटा मु रिपीटेडली लेखुची, तमे डिफॉल्टेड कहले बुझी पारे. डिफॉल्टेड माने कोन? तार ड्यूटी जदि से एक्सरसाइज करनी ता माने कोन? स्पेसिफाइड टाइम पर से दोनी किबा स्पेसिफाइड पर्पस एकम्प्लिश हैला पर से दोनी. आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम और आफ्टर फुलफिलिंग स्पेसिफाइड पर्पस. क्लियर? तो फर्स्ट आगो पॉइंट रो ए पॉइंट रो डिफरेंस कोन मते कहि पारियो? माने आगरे भी बेली रेस्पोंसिबल होथिला लॉस पई, एडी भी रेस्पोंसिबल होची लॉस पई. तो कोन डिफरेंस अछि मते को? कोन डिफरेंस अछि एडी? ठीक अछि, सीडी परफॉर्म करथिले, एडी परफॉर्म करनी, बट जिंसो कोन आली कहिले परफॉर्म करूनी ता लागि किछि लॉस किबा डिस्ट्रक्शन हेछि.
माने आमे दीटा जिंस अलग रे पढ़छ दीटा जिंस कॉम्बिनेशन रे पढ़छ माने कोन से जदी परफॉर्म करूनी देन कोन ताकू रेस्पोंसिबल कहि परिया बट से नॉन परफॉर्मेंस लागी किछि भूल हैला लॉस्ट हैला गुड्स डिस्ट्रॉयड हैला डेड रेट हैला खराब हैला ता पई से किछि डैमेजेस पेमेंट करछ क्लियर देन देखो सब सान सान सेक्शन नंबर उडागो पेशेंटली सुनो टिके Section number 163 provides that in the absence of any contract to the contrary, the bailee is bound to deliver to the bailiff according to his direction any increase or profit which may have accrued from the goods. हैला एडा गुटे कॉमन एग्जांपल बहुत थरे एडा सुनथिबो गुटे काउ थिबो जोडा कि केयर से नथियो ए भितर ताको गुटे काफ टी हबो तो से काफ को भी काउ देदार अछि बेलर को देदार अछि से कहि परियन तू खाली काउ देइछु मु काउ आगा देबी काफ देबी नेली से कहि परियन से कोन कहै छै देखो सेक्शन नंबर 163 section number 163 bailee is responsible to return any increase or profit of goods bailed to कागो बेलर को एडी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती even if there is no prior agreement subsisting between them no prior agreement subsisting between them clear एडा हाइलाइट करबे जेतले तुमे नोट रे लिखिबो ए पॉइंट टा को हाइलाइट कर ए पार्ट टा माने से रिस्पांसिबल टू रिटर्न तो हमें बहुत सारे पढ़छ बट एडी कोड हाइलाइट करियो ना तर गुड्स इंक्रीज हैला किबा प्रॉफिट किछि एक्स्ट्रा मिलला ताकू से गुड्स से बिकिबा कहिछि से बिकला परे जदी किछि पैसा एक्स्ट्रा मिलला ताकू गुड्स किबा किछि एक्स्ट्रा मिलला देन से सब जिंस जाउ से कोन रिटर्न करिया पे बाध्य सेकंड थिंग देखो Section number 165 provides that if the several joint owners of goods bail them, the bailee may deliver them back to or according to the directions of one joint owner without the consent of all in the absence of any agreement to the contrary. माने कोन if several joint owners of goods bail them हैला गुटे बेलर थिला एबे कोन several bailers अछंदी may bailee may deliver them back to or according to the directions of one joint owner without the consent of all in the absence of any agreement to the contrary हैला देखो की पॉइंट एडा गुटे एंड केस लॉ भी हेई पारियो एडी वेरी इंपोर्टेंट मार्क करो एंड केस लॉ हे पारियो हटके पॉइंट ना एडा सेक्शन 165 provides that bailor जे भी अछि से joint bailers or number of bailers बेल गुड्स कागु बेली को तो बेली में रिटर्न बैक the goods bailed to one of the joint bailor माने जदि कॉम्बिनेशन ऑफ बेलर्स अछंदी बेलर्स मिसी गुड्स दोचंदी तो से काउ जणो गाले देई पारियो विदाउट एडा इंपोर्टेंट एडी विदाउट द कंसेंट हैला आ बाकी समस्त पचरिया दरकार नै फोन करी कि मु ताको देई दोछि चलिबो ना हैला से किछि काउ पचरिया नै जणो को देई देबो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर बेलर्स or no prior agreement
ना ताको कंसेंट दरकार ना ताको एग्रीमेंट दरकार माने आ माने कोन हैला ना जे भी जॉइंट बेलर माने अछंदी जे भी जॉइंट बेलर माने अछंदी समस्तंगर कोन हबो इक्वल राइट अछि गुड्स प्रति इक्वल राइट अछि इक्वल लायबिलिटी अछि तो जेतु समस्तंगर राइट एंड लायबिलिटी टा इक्वल अछि तो कोन हबो ना जेतु से रिटर्न बैक करला आलु से समस्त पचरे दरकार नै किबा एग्रीमेंट टा अछि नै खुजिया दरकार नै धीरे धीरे से देखिया दरकार नै से आराम से काउ जणो को दे दे पारे काउ भी क्वेश्चनेबल ना हैला एडा इंपोर्टेंट होची ए फर्स्ट पॉइंट हेडा सेकंड पॉइंट हेडा ताको प्रायर एग्रीमेंट दरकार नहीं कंसेंट दरकार नहीं हैला प्रोविजन टा इनके ब्रेक करले हम की पॉइंट्स टा हाईलाइट करू तो हाईलाइटिंग पॉइंट्स होची ए दी डायरी देखो सेक्शन नंबर कोड थिला सेडा Section number 166 provides that if the bailey has no title to the goods and bailey is delivers them back to or according to the directions of the bailier, the bailey is not responsible in respect of such delivery. That if the bailier has no title to goods, bailier or not dynamic goods, and the bailey is in good faith. हैला bailey ठीक ठाक अछि bailey विश्वास करछि कि ता ना रागा अछि एली कहली delivers them back to or according to the directions of the bailier. हैला से जानि किछि से जेते देछि तारा आगा भाबिछि बेलर को रिटर्न कर देला किबा कोन बेलर जेमति कहला सेमति रिटर्न कर देला द बेली इज नॉट रिस्पांसिबल टू द ओनर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट देखो एडा अगेन इट्स एन इंपोर्टेंट पॉइंट काकि बेलर नारे नाही गुड्स हैला बेलर कोन कहला का पाखरे गुड्स का गुड्स हमको जाना नहीं हैला फाइन से मनोर ताको कोडिले मिलेला सुना कोन मिलेछि सुना ताको देला बेली को तू रखी था हैला रखिला से 2 मास से कहछ 2 मास परे तू से पर्टिकुलर पर्सन को जाई के दे दे हैला मो ताडू रिसीव कर देबी से आउट पर्सन को जाई दे देला हेले एबे कोन हला जे तू से सुनाडा चुरा माने लाइक चोरी करी के आनिछि तो से पर्सन को जाहा को देछि ता पाखु को पुलिस गले जेतलो कहिले कि के देछि एडा से कहला बेली ना कहला बेली को जेतलो पचारले तो बेली जानि बेलर हिसाब रे एग्रीमेंट हेछि ता हिसाब रे से देछि तो एडी जे तो बेलर ना रे सेडा नाही तो का ऊपर केस हबो ना बेलर ऊपर केस बेली को सेडा पचारि पारेन काहेकि बेली इज इन गुड फेथ इन हिज टर्म्स माने ता आडू से पूरा पूरी ठीक अछि बट बेलर जे भी अछि तार टाइटल टू गुड्स इज डिफॉल्ट माने डिफेक्टिव अछि तार गुड्स नाही तो बेली एडी बिल्कुल भी रिस्पांसिबल हबन हैला सो एडा से कहूछ लेखो सेक्शन नंबर 166 सेक्शन नंबर 166 बेलर डिफेक्टिव टाइटल माने जानछो एटा होछि लॉ लैंग्वेज ता मोडे लिखि दोछ तमे सिंपल समझिया पाए बट वर्ड यू हैव टू यूज दिस डिफेक्टिव टाइटल एटा मल्टीपल टाइम्स आसीबो तमको सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे पे आसीबो इट्स द कीवर्ड डिफेक्टिव टाइटल माने goods which do not belong to a particular person which do not belong to a particular person गोटे पर्टिकुलर पर्सन को जेतलो गुड्स ता बिलोंग करूनी हैला बेलर जदी गुड्स दोची जोडा कि डिफेक्टिव टाइटल अछि का को दोची बेली बेली रिटर्न्स बैक और acts as directed जेमती से कहिछि सेमती एक्ट करे रिटर्न बैक करू किबा एक्ट करू तो बेली cannot be held liable for defective title तो के responsibility bailier is responsible bailier is responsible for defective title clear section number 166 and 165 are very important from case law point of view हैला defective title from
मीनिंग कोन डिफेक्टिव टाइटल रो मीनिंग रे भी अच्छा बेली और ए पॉइंट रे आउटे कंडीशन डी आछि कोन ना बेली तो जानछि कि गुड्स तारा नाही आ से रखिछि तो से केस रे एटा प्रॉब्लमेटिक हे परियो बेली पई तो से जिंसरा किन जानिए पुलिस किन जानिबे इंटरोगेशन रे जानिबे किबा इन्वेस्टिगेशन रे जानि परि बट अल्टीमेट जिंस होछि कोन बेली जदी जानि कि रखिछि जानिछि कि से गुड्स तारा नाही हेले से रखिछि ता पोजीशन रे देन कोन हबो से बेली कोन रिस्पांसिबल हेबो. Section number 167 provides that if the person other than the bailier claims goods paid by the court to stop delivery of goods to the bailier. So, एक point हम छाड़ रही. Termination of gratuitous bailment है कौन? Gratitude रे जदि किसी से दे दीची bailment हिसाब रे, है ना? Gratitude किसी bailment दे दोची. तो से जिनसे केबे terminate होगा जदि bailier किबा bailey मरियल ले से जिनसे terminate ही. तो एटा गुटे bit question हिसाब रे आसी परियो. Further explanation किसी दरकार नहीं सेटा. Right of third person देखो if a person other than the bailier है ना bailier न हेगिरी आ गुटे person जदि claim करची goods bail ऊपर मोरा right अछि हली कहि कि जदि से कहउची तो से काओ कहि परियो he may apply to the court to stop the delivery of goods to the bailier and to decide the title of the goods हैला से कोन कहउची जदि third person रो right अछि. Section 167 कोन कहउची bailier bailey अछि हैला third person demands for goods bailed हैला bailey कोची मु ताकु अगर रिटर्न देबी ताकु अगर want to return करी तो थर्ड पर्सन ए जिंसडा को माने स्टॉप कोन कर परियो जदि ए जिंसडा स्टॉप करे अछि थर्ड पर्सन जे भी अछि से अप्रोच करियो कागो कोर्ट बुझी दो से अप्रोच करियो का कोर्ट को अप्रोच करी कोन डिसाइड करियो डिसाइड टाइटल ऑफ गुड्स decide title of goods clear आज जति मनर पर्सन गुड्स मिले जनरल मिले. Section 168 provides that finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him to freeze the goods and to find out the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for the return of goods lost, the finder may sue for such reward and may retain the goods until he receives it. Therefore, जदि भी goods गुडियले अछि सेडा मिलेला तो सेडार दीडा सर्कमस्टेंस हे परियो गोटे होची जदि से रिवॉर्ड माने से गुड्स पे रिवॉर्ड अछि हैला सुन्ना हजी इची से सुन्ना पे गोटे एडवर्टाइजमेंट दिया आइची कि जे भी ए सुन्ना को आनी दी दोछनी दे विल बी गिफ्टेड विथ 1 लाख रुपीस 1 लाख रुपीस तांको रिवॉर्ड मनी अछि हैला मिलले दे दो तो 1 लाख रुपीस रिवॉर्ड मनी अछि आ सेकंड केस रे कोन किछि भी एक्सपेंडिचर किले किछि भी रिवॉर्ड नाही तो जेतु रिवॉर्ड अछि सेकंड केस रे रिवॉर्ड न देला जे से गुड्स रखि परियो आ रिवॉर्ड न देले से केस करि परियो काहेकि से ऑलरेडी स्पेसिफिक ऑफर टा दे देछ बट अदर केस रे से कोन कोस देखो नो राइट टू sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation. जदि देखो से किछि एक्सपेंडिचर इनकर करछि ओनर को फाइंड आउट करिया पई तो से केस रे से लायबल माने से केस रे से पचरी परियो ताकू कि तमे टिके पैसा दियो काहे गेले मो एक्सपेंसेस इनकर करली तुमको फाइंड आउट करिया पई आ जदि से किछि कंपनसेशन ता दोनी से कंपनसेशन देला जे ये कोन गुड्स ता रिटेन करिकि रखि पारि क्लियर जदि किछि रिवॉर्ड मेंशन हेछि हला लेखो एडी राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स दीडा केस अछि देखो no specific reward specific reward
demand for compensation, demand for compensation. যদি স্পেসিফিক রিওয়ার্ড কিছু নাই তো এক্সপেন্স যদি মনরে ইনকর করছে সি এক্সপেন্স ইনকর করলা সে কম্পনসেশন মাগি পারিও না সে খালি রখিকি মাগি পারিওনি তো এক্সপেন্সেস নট ইনকর্ড কিছু কেস সে কিছু কইনি হেলা নরমালি রিटर्न कर देबो রিटर्न एंड cannot sue ता ऊपर किछि केस कर परियो बट एडी स्पेसिफिक रिवॉर्ड रे can sue if reward not given से फाइंड करी तरह से कुछ ना हम देबेनी लेकर कोन बाडे अछि त बाडे यानी केस करिया can sue if reward not given can sue if reward not given and can keep the goods से कोन goods रखी परियो सेते जे से पैसा दोन can keep the goods until such reward given एडी भी कोन डिमांड फॉर कंपनसेशन एंड रिटेन करि परियो सेते कंपनसेशन मिलला जाय एंड रिटेन until such compensation is received clear until such compensation is received then देखो last thing Bailey's law lien अच्छा section number 169 देखो provides that when a thing is which is commonly the subject of safe is lost माने safe से जिनसडार safety demand अच्छी and से जिनस lost हेची if the owner cannot with reasonable diligence be found or if he refuses upon demand to pay the lawful charges the finder may sell it हैला सुनियो जदी रागियला कोन करला से जिनस बिकि देई पारे हैला when the thing is in danger of perishing by or losing a greater part of its value हैला माने कोन पेट्रोल मिलला रे ताकू पेट्रोल कोडी के छाड़ देथिला से ओनर को कहले तू मते पैसा देले देबी से कहले नाइ मु देबिनी एले कहले से कोन वर्ष जरी जगी होगी नाइ सेडा वेपराइज हेई जीवो ना से कोन करे से पेट्रोल ला बिकी पैसा माने कोन रीइंबर्स कर दे पारिबो लाइक रखी दे पारिबो माने कोन डेंजर ऑफ पेरिशिंग पेरिशेबिलिटी अछि से जिंसर किमा कोन लॉसिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू माने मैक्सिमम पेट्रोल ला कोन लॉस हेई जीवो तो से केस रे से कोन कर परियो सेल कर दे परियो when the lawful charges of the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value माने देख सुन्ना मिलथिला 1 लाख रुपीस से रिवॉर्ड कहछि कि 1 लाख रुपीस रे सुन्ना मिलथिला से एक्सपेंडिचर आगे इनकर कर देला 75000 से फाइंडर को फाइंड आउट करिया पई आ जदी से केस रे से केती कंपनसेशन देबो ताड भलो कोन से सेडा बिकी की पैसा नै जे दीडा जे जिंस अछि हमर माने कोन एडा चार्ट बनेबो परे जेतळो को सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेफ्टी इज लॉस्ट हैला सब्जेक्ट मैटर ता लॉस हेबार चांसेस अछि सेकंड थिंग कोची कोन से रीजनेबल डिलिजेंस नेछि रीजनेबल केयर नेछि हेले ले कोन से फाइंडर ऑफ गुड्स कोन कहउछि पैसा देबिनी हैला से मतलब मेडू होछि ओके मेडू जदि होछि एली कहले मतलब थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग पेरिशेबिलिटी टा अछि सेडी किबा लूजन द ग्रेटर पार्ट माने मैक्सिमम वैल्यू तार लूज हे जिवो तो ए केस रे से कोन करियो सेल कर दे पारे सेकंड थिंग होछि लॉफुल चार्जेस जहां भी एक्सपेंडिचर इनकर करछि से एक्सपेंडिचर उडा कोन बहुत हाई वैल्यू हे जिछ हैला It was held that it is not always necessary that the sale should be by owner himself. Sale by agent or anyone with the consent of the owner is valid. Finder of the asset can also sell and give title. There can also be sale by estoppels. So it is a important point. से कोची फाइंडर ऑफ गुड्स कैन आल्सो अमाउंट टू सेल ऑफ गुड्स माने जदी कोई गुड्स फाइंड आउट कर देछि आ से एक्सपेंडिचर इनकर करछि किबा कोन जहां भी डेंजर ऑफ पेरिशेबिलिटी अछि से फाइंडर ऑफ गुड्स को माने गुड्स रो ओनर को फाइंड आउट करि पारलानी कोन से भी केस लागी गुड्स जदी ता पाखरे रहिला आ से सेल कर देला तो से आगे ओनर हे जिवो अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉ ऑफ एस्टॉपल माने कोन एना सेल ऑफ गुड्स एक्ट रो गोटे केस ता सोगा फाइन Last topic for today of Bailey's lien. Section 170 provides that the Bailey has, in accordance with the purpose of bailment, rendered any service involved in the exercise of labor or skill in respect of the goods paid,
contract to the contrary are right to retain such goods until he receives due remuneration for the service he has rendered in respect of them. माने कोन when the bailey has in accordance with the purpose of the bailment purpose of the bailment हिसाब रे किछि काम कला rendered any service से किछि सर्विस प्रोवाइड करला इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ लेबर कोन लेबर रो इन्वॉल्वमेंट अछि skills रो इन्वॉल्वमेंट अछि in respect of the goods bailed हला he has in the absence of a contract to the contrary a right to retain such goods until he receives due remuneration for the service he has rendered हला जिनस होची कोन जदी मनर गोटे काउ एंड काफ को दिया छै काउ को दिया छै से काउ को कोन किछि सर्विस डिमांड कर काउ को सर्विस माने कोन किछि भी कोन ताकू वैक्सीनेशन वगैरह देबार अछि हला ताकू से इल हे वाला से काउडा रखाइ छै से एग्रीमेंट रे किछि मेंशन हेनी कि मु किछि सर्विस प्रोवाइड करी एली कहगिरी बट कोन हे छि जेतु काउ जे भी अछि से काउ को जतलो से इल हैला से इलनेस पे से कोन किछि मेडिसिन देला किबा वैक्सीनेशन दा देला तो से मेडिसिन किबा वैक्सीनेशन रे पैसा से डिमांड करि परियो ना नै ऑब्वियसली कर परियो तो बेलर कहि परियो नै कि से जिंस रो एग्रीमेंट रे किछि मेंशन नै से जिंस रे किछि पैसा दे परियो तो से कोन कोछ देखो व्हेन द बेली acted as per purpose provided services involving कोन कोन छै हमरो देखो लेबर आ कोन स्किल लेबर आ स्किल अच्छे से तो लेबर और स्किल जे तो अच्छी in respect of goods bailed plus no agreement that service provide करची बेलर जेमती कहि सेमती एक्ट करची आ किछि एग्रीमेंट नाही से केस रे कोन हबो से केस रे मेन पॉइंट आछे हमर कोन he can माने कोन बेली can retain goods जो भी goods retain कर परियो retain goods plus कोन he receives due remuneration until he receives due remuneration for his services ता आखर राइट से पूरा पूरी से जिंसडा रख दे परियो until and unless he receives such remuneration about the goods or the services he has given से किछि न कोइ कि मध्य से कोन सर्विस प्रोवाइड करछि जेतु तो कोन हबो से जिंस पे से रेम्यूनरेशन पे कोन लायबल क्लियर with this we complete bailment next class में देखिए pledge and agency fine thank you like share and subscribe